Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to everyone, and thank you very much for it's echoing the voice. Sorry. Hello. Ahmed, can you hear me? Yes, of course. Okay, the voice is actually repeating. I don't know why. Yes, I can hear you. Please continue. Okay. Thank you very much for inviting me to this webinar, and I'm very grateful for this invitation. And आज के दिन क्योंकि एक और मैसेकर को हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, जिसके अंदर एक सीरीज है, एक हिस्ट्री है ऑफ वेरियस हॉरिफिक मैसेकर्स. और ये छोटा बाजार का जो मैसेकर है, बहुत ही हीनियस क्राइम जो हिंदुस्तान ने ऑन एंड ऑफ कमिट किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में. और ख़ास तौर पे जो ये छोटा बाजार है, इट इज़ नियर कोटी बाग, and that is very near to my, just a few minutes away from our home in Lal Chowk, Maisuma. So I've seen that area. In fact, I've gone there to the market, and there's a school also over there, Mohammedan High School. And the locality, it's Tani Kadal, that area, it's like almost like downtown, the hub of business, Lal Chowk and Chota Bazaar and these markets. It's very overly populated areas, densely populated areas हैं वहाँ के. और यहाँ पे लाल बाजार भी है, तो यहाँ पे बहुत सा wholesale का भी कारोबार होता है. And Kashmiris are known for doing good business around the world, and they have those skills, handicraft की दुकानें हैं, बहुत कुछ है और ट्रेडिशनल. बट इसके पीछे सब मार्केट्स के इस हसल बसल के पीछे एक बहुत ही सैड रियलिटी है लोगों की. मे बी द वर्ल्ड हैज फॉरगॉटन, लोगों की दुनिया की मेमोरी शायद वीक हो गई है. उनको कश्मीर में तो एक नॉर्मल रूटीन ही समझी जाती है, स्पेशली अर्ली 90s से अगर हम देख लें कि जो हिंदुस्तान की तरफ से जो किलिंग ईयर्स आई वुड से जो स्टार्ट हुए 1990s के अंदर, स्पेशली जब इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी, एक मिलिटेंट मूवमेंट भी, आर्म स्ट्रगल भी थी, पॉलिटिकल मूवमेंट भी थी. तब से लेकर अब तक तो ड्रैकोनियन लॉज इम्प्लीमेंट हुए 1990 ऑनवर्ड्स, टाडा पोटा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. तो लोगों को रेगुलर क्रैकडाउन्स, लॉकडाउन्स शुरुआत हुई, किलिंग स्पीस की. रेप was used as a weapon of war and many other incidents on a daily basis, और अब तक हो रहे हैं. और इस इंसिडेंट की जो कि आप मूवीज में भी देखते हैं, थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज के अंदर ऐसे बहुत से सीन्स हैं, बहुत ही खौफनाक सीन्स के मछली की तरह तड़प रहे हैं लोग, जख्मी हैं सड़कों के ऊपर, और उनके पास कोई है ही नहीं उनकी हेल्प के लिए, और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग चल रही है, और लोग शॉपिंग के लिए गए. Just imagine going to Jinnah Super or any other Centaurus for that matter. I hope that never happens, but something like that happening, and then suddenly the army comes and starts spraying bullets, and there's blood splattered everywhere. तो लोग क्या करेंगे? उसका इम्पैक्ट आई थिंक पूरी लाइफ जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कश्मीरियों पे गुजरता है, हर नस्ल में हर रोज वहाँ पे कहीं ना कहीं इस रीजन के अंदर जो ऑक्यूपेशन का है उसके अंदर ये इंसिडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, उनकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर होते हैं. फिर उसके साथ साथ जो उनके ऊपर अब्यूज किया जाता है, जो उनके राइट्स छीने जाते हैं, राइट टू लिव, राइट टू शॉप, राइट टू ईट, राइट टू, एज द प्रीवियस स्पीकर सेड दैट कि प्रोटेक्टिव कस्टडी होती है मैटर्स के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के, वॉर जोन्स के भी राइट्स होते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो स्ट्रगल, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये राइट्स की मूवमेंट है. हमारे लीगल जो राइट्स है, जो हर इंसान जो दुनिया में आता है उसको राइट्स दिए जाते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर के मुताबिक, यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, और जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हर इंसान के हैं कि वो अपनी उसकी एक शनाख्त हो. और ये पहले ही 9 लाख जो फौज है हिंदुस्तान की आर्मी, उसके तले कश्मीरी कौम जो है वो अपनी जिंदगी उस हिरासत में गुजार रही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी रिसेंटली जो आजकल इन्हीं दिनों के अंदर 200 से जायद वहाँ पे जो है आर्मी की जो वहाँ पे भेजी गई है, तैनात की गई है,
تو thousands میں اور بھی زیادہ آکوپیشن کو بڑھایا جا رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں. اینڈ then before in the 90s, if you compare this massacre with the recent ones or also the past, جس میں even آپ 1865 کا شلباف کا میسیکر جو تھا وہ ڈوگرا رول کے خلاف جو ظلم ہوا کشمیریوں کے اوپر, پھر 1931 کے اندر سینٹرل جیل کا جو میسیکر ہوا جس کے اندر 21 civilians were killed by the Dogra army when they were fired upon at the protesters. یہ بھی بڑا ایک مشہور میسیکر ہے کشمیریوں کا. پھر جموں کا میسیکر جو ہم بہت دفعہ کوٹ کرتے ہیں جب انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن کی بات کرتے ہیں, تو 5 لاکھ مسلمانوں کو RSS نے سلاٹر کیا, بے ہیڈ کیا, اور ان کی بہت سی فیملیز جو ہیں اس وقت پاکستان آزاد کشمیر میں جو زندہ بچ گئے, بھاگ کر جو آ گئے. تو وہ جو جینوسائڈ اس وقت بھی ہوا, اس کے بعد بھی جموں جو ہے وہ ایک میجورٹی مسلم ایریا سے کنورٹ ہو کے مائنورٹی میں بن گیا, اور وہ ایک ریجن آف ٹیمپلز بن گیا. وہاں پہ اب میجورٹی ہندوؤں کی ہے جو انڈیا سے وہاں پہ جن کو کازمیٹکلی وہاں پہ فٹ ان کیا تھا. اس طرح کے جو میسیکرز کیے گئے, گاؤں قدل کا میسیکر ہے, پھر وہ بھی آپ 1990 کا تھا. اور یہ 1990s بہت امپورٹنٹ ہیں, جو احمد قریشی صاحب نے بھی بات کی کہ لیٹ 80s میں جو انسرجنسی کی جو موومنٹ کی جو پیک تھی, اس کے بعد جو بلیک لاز امپوز کیے گئے ریگولر بیسس پہ, بہت زیادہ وہاں پہ کلنگز کی گئیں, کلنگ ایئرز شروع کیے گئے ہندوستان کی طرف سے بائی ڈیزائن. اور پھر وہ اس کا سلسلہ بڑھتا گیا. گاؤں قدل کے اندر بھی 50 سیویلینز کو شہید کیا گیا ہندوستان کی آرمی کی طرف سے, جو گاؤں قدل کا برج تھا. حوال کا میسیکر تھا 1990 کا. کیونکہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دنیا کی میموری بہت ویک ہے, اور ہندوستان کی ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک منوپلی کہہ دیں, یا ان کی جو ہائپر پروپیگینڈسٹک جس طرح کا ان کا میڈیا ہے, یا ان کی جو ورکنگز ہے جو ڈس انفو لیب کے تھرو بھی بہت سی ایکسپوز ہوئی ہیں, جو ان کا جھوٹا نیریٹو ہے. بٹ آن دا ہول انٹرنیشنلی ان کا ایک بہت بڑا ایک کلاؤڈ ہے, ان کا ڈائسپورا انڈینس کا, جن کو بائی ہارٹ رٹا ہوتا ہے ان کی اسٹیٹ پالیسی, کس طرح انہوں نے انٹرنیشنلی اپنے ہندوستان کے جھنڈے کو پروموٹ کرنا ہے اور کشمیریوں کو ٹیررسٹ دکھانا ہے, پاکستان پہ ہر غلطی کا بلیم کشمیریوں پہ یا پاکستان پہ ڈالنا ہے. تو ہماری جو ویکنیسز ہیں, جو آج کیا امپورٹنس ہے, صرف ہم نے ان کے لیے یاد نہیں کرنا اس انسیڈنٹ کو کہ بھی آج کے دن یہ تاریخ ہے, دیٹ از 11 جون 1991 کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. اس کو ہم نے پھیلانا ہے. It's part of the record, it's part of the evidence that can be used legally in international forums. اور میں موسٹلی اب جتنے بھی ہمارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو وہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر, اس کے لیے جس طرح پچھلی بھی اسپیکر نے بات کی ہے, میں بھی یہی کہوں گی تھرو دس فورم کہ ہم ان کو اکٹھا کریں. ہمارا جو یوتھ ہے, اسپیشلی یوتھ فورم فار کشمیر کے تھرو جس طرح کی آپ یہ ٹریننگ ورکشاپس کر رہے ہیں, یہ بیسکلی آپ نیشن بلڈنگ کی ورکشاپس کر رہے ہیں. جب تک آپ کو اپنا کیس ہسٹوریکلی, لیگلی, پولیٹیکلی اور انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو میں UN میکنزم کے تحت نہیں پتا چلے گا ایجوکیٹڈ یوتھ کو, تو ہمارا یہ جو فیوچر ہے, جو آج کا جو اس وقت یوتھ اس وقت تھنک ٹینکس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اسپیشلی YFK کے اندر, we have to prepare all of you. جتنا ہمارے پاس نالج ہے, جتنا اس کے اوپر پرنٹ میڈیا کے اندر ایویڈنسز ہیں, جتنی رپورٹس ہیں اس کے اوپر, ان سب کو کلیکٹ کر کر ہی ہم اس طرح ڈیمانڈ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے اور UN سے بھی. We should demand from the UN collectively as the public, as educated youngsters, to start sending them letters, emails to constitute a UN commission of inquiry on all these custodial killings that have taken place for over 70 years in Indian occupied Jammu and Kashmir, and also to persuade that the UN should persuade the chief prosecutor of the International Criminal Court to open formal investigations to bring to justice. جتنا بھی وہاں ظلم ہوا ہے, اور کسی کا کوئی جسٹس تو وہاں ملا نہیں ہے. بہت سی کمیٹیز فارم ہوئی ہندوستان کی طرف سے, مگر آج تک ہندوستان کے آکوپیشنل فورسز کو پنش نہیں کیا گیا because of the immunity that they have. If the occupier has a license to kill and not be charged guilty for it or punished or prisoned or punished for it, then what do you expect? وہ تو فرعون بن جائیں گے, وہ تو مارتے رہیں گے کیونکہ ان کو اسٹیٹ پیٹرنیج, اسٹیٹ کا سپورٹ ہے. تو ایک یہ چیز ہے, اور اس کے ساتھ جو ایکولی اب اور بھی بڑا چیلنج ہے 2021 کے اندر, جو ہمیں
ارلی 90s میں نہیں تھا وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری شناخت بھی چھینی جا رہی ہے. اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, اگر ہندوستان کی آکوپیشنل فورسز ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ, بٹ ناؤ another further challenge that we have is the way that they are fast track changing the demography of a disputed territory that falls under the UN umbrella. And as the previous speakers also said, it's very simple. India took it to the UN and there are pending resolution. It's the oldest pending conflict in the UN. And many a times it is discussed in various forums that, you know, if it falls under Chapter 6 of the UN, then, you know, you cannot send force over there by the UN. But I think this issue is not just about Chapter 6 or Chapter 7. It's about international peace and stability and security. So these massacres, this bloodbath is directly linked with the peace and stability of this entire region. And 2 years back, 27th of February, nuclear codes were exchanged between India and Pakistan. So this is a very, very dangerous nuclear ticking time bomb situation. So jab tak hum in issues ko, jo hamare saath jo incidents hue hain, jahan pe hamare rights ko छीना gaya hai, brutality hui hai, खास तौर पे आज का दिन छोटा बाजार का, जो आप सोच लेना going into a market और वहाँ पे अचानक फोर्सेस को आ जाए और वहाँ पे आपको सबको मारने लग जाए, एंड यू आर सो हेल्पलेस, आप बेबस हैं कि आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकती हैं. तो क्योंकि आपके पास कोई लीगल राइट्स तो छोड़े ही नहीं है हिंदुस्तान ने. तो इसके ऊपर बहुत से एवेन्यूज हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है. और मैं इस फोरम के थ्रू आई वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो कि एक लीगल सेल इनका होना चाहिए जिसके तहत ये इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि गारंटी करता है आज़ादी का हक, right to self-determination का, and Pakistan is one of the major parties of the UN. It's a signatory of the UN resolutions, and such incidents should be documented, and such reports must be presented before the Security Council, for the Human Rights Commission. And we are lucky in a manner that पिछले 3 सालों के अंदर जो UN Human Rights Commission की जो कि 70 साल से रिपोर्ट्स नहीं आई थी, वो भी अब आने लग गई हैं. तो ये इट इज नॉट जस्ट के इन्हीं सालों के लिए या बुरहान वानी की शहादत के बाद की, बल्कि पूरा जो ये स्पैन है ऑक्यूपेशन का, उसके अंडर इसको लेके जाया जा सकता है. तो इसके ऊपर कोई पॉलिसीज आनी चाहिए. और एक और जो मैं समझती हूँ एक परमानेंट जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, UN ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसके तहत भी इस मामले को लेके जाया जा सकता है. सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं, बट आज का जो इंसिडेंट है और इस तरह के और भी बहुत से जिनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो राइट्स अब्यूज़ हुए हैं कश्मीरियों के, उसके लिए पूरी एक टीम होनी चाहिए हमारे पास, जिसके तहत हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्योंकि क्राइम्स तो ये हो रहे हैं, जेनोसाइड का क्राइम है, ये एथनिक क्लेंजिंग का क्राइम है, ये मैसेकर्स जो भी जितने भी हो रहे हैं, जेनोसाइड happens to be what you call the biggest crime in the world on mankind, and it's an unforgivable crime. और एक और बहुत important चीज जो मैं mention करना चाहूँगी कि no first use nuclear जो policy थी, NFU जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं 2019 के अंदर, उन्होंने ये mention किया था कि राजनाथ सिंह ने अपनी स्पीच में कि हम इसको रिव्यू करेंगे. तो ये भी हमारा जो मामला है कश्मीर का मसला, उसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए, और जो इसकी ग्रेव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट, लूमिंग न्यूक्लियर थ्रेट, तो ये भी चीजें मेंशन हो सकती हैं along with these massacres. Thank you.